Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. As we are discussing tragic plot and its main parts, now we are going to discuss a major division about plots that Aristotle discussed in his lectures. As earlier, we have discussed that tragedy is not supposed to be a suffering based drama in the terms of Greek sense. Tragedy meant there a serious play, a serious drama. So Aristotle divides the play and plots into two types, that is, fatal and fortunate plots. And further, he gives preference and importance to fatal plots. Fatal mean janleva, molik, that is harmful. He says the best type of tragedies or the best type of drama move from happiness to suffering, because the main purpose of tragedy defined by Aristotle is to arouse pity and fear, for purgation, for moral cleansing. And it can be carried out when a tragic hero meets his tragic downfall, when he suffers from fortune to misfortune. That shift from happiness to misery, that shift from fortune to misfortune is going to arouse the emotions of pity and fear among the readers, among the spectators. ठीक है, सो यहाँ वो एक चीज़ क्लियर कहता है कि fatal plot that ends on unhappy ending is most important or more significant than the fortunate plots. आप नाम से इसको याद रख सकते हैं. ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैटल एंड फॉर्चुनेट प्लॉट्स. तो आप यहीं से इसका जवाब दे सकते हैं कि वो कहता है कि एरिस्टोटल कंसीडर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ फॉर्चून फ्रॉम मिजरी टू हैप्पीनेस. यहाँ हमारे पास एक सवाल ऐसा भी आ सकता है, मुख्तलिफ क्रिटिक्स हैव रेज्ड क्वेश्चंस कि ऐसे कौन सी ट्रेजिडीज़ थी जो मिसफॉर्चून से फॉर्चून की तरफ गई. लेकिन चूँकि बहुत सारा जो इसका बल्क था इसके लेक्चर्स का वो हम तक नहीं पहुँचा, इसलिए हमारे पास ऐसी कोई एग्जांपल्स नहीं हैं कि उस टाइम ऐसे कोई प्लेस जो थे वो परफॉर्म किए गए थे. तो इसलिए हम अपनी जो मालूमात हैं और अपनी डिस्कशंस जो है वो सिर्फ एरिस्टोटल के जो बताए हुए पॉइंट्स हैं उन तक महदूद रख सकते हैं. ठीक है, जैसे वो कहता है the change from happiness to misery seem more appropriate. Appropriate mean suitable, apt to the arousal of pity and fear. He agrees with other critics in calling Euripides the most tragic of the poets because his plays had unhappy ending. Aristotle seems to prefer a fatal plot to a fortunate plot. तो यहाँ उसके नज़दीक यूरिपिडेस के जो प्लॉट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इस वजह से क्योंकि वो आपके एक करेक्टर को फॉर्चून से मिसफॉर्चून, उसकी हैप्पीनेस से मिजरी की तरफ जो है वो उसकी मूवमेंट लेके चल रहे हैं. नेक्स्ट अपने लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चर वाइज जो हमें प्लॉट्स बताए गए हैं, ये तो आप थीम वाइज समझें, तो स्ट्रक्चर वाइज हमें प्लॉट्स का एक बताया गया है जिसमें वो सिंपल एंड कम्प्लेक्स लेके चल रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे. थैंक यू.